Good evening, guys. I hope you are doing good. I am also good. Today, we are going to start with Accounting Standard 17. In last session, we have finished with the Accounting Standard 17, two questions to give you the idea about the Accounting Standard 17. And today, we are going to start with the Accounting Standard 17. But before starting any session, you are aware about our first priority is to recall all accounting standards. So let's start with the accounting standard names. So S1 is disclosure of accounting policy. S2 is inventory valuation. S3 is cash flow statement. S4 contingencies and events occurring after balance sheet date. S5 is net profit or loss for the period. Prior period items and changes in accounting policies. 6 number is removed. 7 number construction contract. 8 number is removed. 9 number is revenue recognition. 10 number is property, plant and equipment. 11 number effects of changes in foreign exchange rate. 12 number government grant. 13 number accounting for investment. 14 is accounting for amalgamation. 15 is employee benefits. 16 number is borrowing cost, 17 number segment reporting, 18 number related party disclosures, 19 is accounting for leases, and 20 number is earning per share, 21 is consolidated financial statement, 22 is accounting for taxes on income, 23 is investment in associates in consolidated financial statement, 24 is discontinuing operation, and 25 interim financial reporting, 26 intangible assets, 27 is investment in joint venture, 28 impairment of assets, and 29 is provisions, contingent liability, and contingent assets. I hope you can recall now any accounting standard with names, because your paper is only accounting standard, and accounting standard. So friends, good evening to all of you. जल्दी 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 आ जाइए हमारे सेशन में. यस, सो जितने भी हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं बेटा, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए. Yes, say good evening, good evening, good evening, good evening. Sir, I am attending your session in very small town from Bihar. Yes, beta. Chandan Kumar ji, welcome to ICAI classes. And Mansi Gupta is saying, sir, today is my first day. One more student saying ki, this is my first day. Yes, beta, welcome to ICAI classes. Sunit Sharma ji is saying, mera pehla din hai. Yes, welcome, beta. So till now, we have completed first 3 chapters for 4th unit, disclosure of accounting policy, and last session, we have started with the business and geographical segment. Recall कीजिए. Yes, फटाफट. Yes, how many of you can recall accounting standard 17? How many segments are there? Chalo, jaldi se, and tell me criterias. Tell me criterias. I'm waiting for your answer. Who is answering very fast? Yes, how many criterias are there? How many criteria? What are the threshold limits? थ्रेशोल्ड लिमिट क्या था ये बताइए. फटाफट फटाफट. And then we will start with our session. चलो 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 जल्दी से ज्वाइन करो. Yes, in last session we have started with S17 and I am asking you about सेशन में बोल देना हो. सेशन मध्ये आहेत. Yes. Okay. So there are 3 types of threshold criteria. Number one, revenue criteria, result criteria, and third number is asset criteria. So now let's start with segment reporting. Today I'm going to explain you what is accounting standard 17. To deal कर. एक ही मिनट बेटा. Yes, beta. Let's start.
Yes. Segment, revenue and results. Okay. Two segments, business and geographical. Very good, beta. And 10% external criteria and internal criteria. Okay. Chalo. So let's start with the applicability. Select either देखिए थोड़ा. I have prepared this information only for clarity purpose. Jay Patel, I am from Surat. Very good, beta. Then scope and objective, benefits to the users. Important terms, then treatment of interest, deciding primary and secondary segments, matrix presentations and business and geographical segments, and identify reportable segments and disclosure part. This standard is very simple. In first half, we are going to cover with theory, and then in second half, we are going to solve some illustrations. So what is the applicability? Applicability, if you remember, for in case of non-corporate entities, level one and other entities, yes, non-SMCs and level one entities, and here other entities encouraged to comply with accounting standard 17. So beta, level one, it is mandatory. So it is mandatory for all big entities. And do you remember that level one criteria kya tha? Level one, I'm not asking about Ind AS. I'm asking about net worth. No, it is turnover. Ind AS is based on net worth and accounting standards are based on turnover. So tell me, for level one enterprise, what is the turnover criteria? So what is the turnover criteria in the comment section? I'm waiting for your answer. What is the turnover criteria? When it will be in level one? कब level one में आएगा बेटा? जल्दी जल्दी बोलो. Level one criteria हमने कब देखा था? Level one criteria कब देखा था? Scope of S17. Yes, I will give time for taking screenshots. Don't worry. Timing for screenshots मिलेगा. So उस time पे ले लेना. It is applied in the presenting general purpose financial statement. So general purpose financial statement means your balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, notes to account, and A17 segment reporting is also applied for presenting general purpose, comply with the requirements of standards fully and not selectively. So this standard is not selective. Part is not applicable. If you are following this standard, it is applicable to all. Okay. Then next one is Haji. Next is, if a single financial report contains both consolidated and separate financial statements, report only on the basis of consolidated financial statements. Report only based on the consolidated financial statement. So suppose if you are following consolidated financial statement also and your standalone balance sheet also, so your report is only for consolidated financial statement. So segment reporting you will prepare only for consolidated financial statements. It's very simple. Objective of the standard. What is the objective? Objective is to establish the principle for reporting financial information. Now, what is the reporting part? About the different types of products and services and enterprise of the products. So this is first one, different types of product, and second one, you are reporting for different geographical areas. So first one is business segment and second one is geographical segment. So you are aware about this principle. Objective about different types of product and services and about different types of geographical areas in which it operates. Okay. If it is more than 250 crores, okay, and 50 crore से ऊपर borrowings. Very good beta. 250 and 50. Some students have written 500 crores or net worth. 250 is the criteria. Beta, you forgot these things. Please make sure that you are Beta, Mansi Gupta ji, it's not possible that I will take your backlog once again. It's very difficult. So you have to watch our all previous sessions. मैं आपको एक ही बोल रहा हूँ कि आपको पिछले सेशन सभी देखने पड़ेंगे और YouTube पे all are freely available. आप सिर्फ लिस्ट में जाके भी देखोगे. Where to go बेटा? You can go it in YouTube live sessions. कहाँ पे देखना है? I will show you. Yes. So इतना तो आपको सबको पता ही है. कहाँ पे जाना है मैं आपको एक बार बता देता हूँ. Where you will get all these informations.
सो यूट्यूब पे जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च कीजिए ICAI ट्यूब। एक बार बता देता हूँ मैं गूगल पे, मेरे यहाँ पे यूट्यूब का ऐप मैंने डाउनलोड नहीं किया। सो एवरीवन हैज यूट्यूब का ऐप ऑन मोबाइल। और ICAI ट्यूब में मैं एक बार आपको वापस बता देता हूँ। हाँ जी, यूट्यूब पे जाके आपको दिस लाइव सेशंस एंड हियर ऑन लाइव यू कैन क्लिक, और लाइव पे यू विल गेट ऑल दीज अपडेट्स। सो आपको ये देखिए, इंटरमीडिएट के ऑल पेपर्स इज अवेलेबल। सो एवरी वन ऑफ यू प्लीज 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 ये ICAI ट्यूब के जिधर भी आपको मेरे सेक्शन में जाके देख सकते हो, आप लाइव में जाके क्लिक करना। सो यूल गेट प्रीवियस लिस्ट ओके ऑफ ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स व्हाट वी हैव कवर्ड टिल टुडे। एंड प्लेलिस्ट शायद से अभी तक बनी नहीं है। आई विल आस्क अवर बोर्ड ऑफ स्टडीज का टीम की प्लेलिस्ट अभी तक, आई थिंक वी हैव नॉट स्टार्टेड विथ प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट अभी तक बना नहीं है, ठीक है, मैं बोल दूंगा प्लेलिस्ट बनाने के लिए। ओके चलो, सो जो लोग अभी फर्स्ट डे है, यू कैन लिसन दिस लेक्चर बट योर ड्यूटी इज टू फिनिश प्रीवियस सेशंस। चलिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 चालू है। स्टडी मटेरियल में से आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव। सो ये दो ऑब्जेक्टिव्स है। नंबर वन, about different types of products and services of an enterprise products produces and different geographical areas. So understood these two things? हाँ जी, okay. Due to different rates of profitability, opportunities for growth and future prospects and risk. Okay, it's very important that differing in the rates of profitability. So your one segment might be in the profit, second segment might be in the loss. So it's better to give it different profitability statements. What are the benefits to the users? Now you can tell me what are benefits you have. Yes, without looking into answer, tell me, without looking into study material, what benefit? Now I already explained you about S17. मैंने आपको already S17 explain कर दिया है। हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, वॉट एवर बेनिफिट्स यू थिंक, वॉट आर द बेनिफिट्स, डोंट रेफर स्टडी मटेरियल, टेल मी बेनिफिट्स दैट यू थिंक कि yes, this benefit I'm getting because of segment reporting. Yes, I want to develop your sense. Karthik is saying, sir, I have understood the importance of live sessions, or as you said, I missed last two classes. Thank God I watched your yesterday's and watching it later. That time never comes, sir. It is difficult to clear that sessions. Thank you, care. You keep us on motivating. Herein after, I won't miss a single live sessions. Very good. Tushar Sharma is asking me, sir, गुरु मंत्रा चालू कीजिए। यस बेटा, गुरु मंत्रा जल्दी से जल्दी चालू कर दूंगा। अभी हमारा टेक्निक में कोलकाता में था इसलिए हो नहीं पाया। नाउ आई विल स्टार्ट। सर वीडियो क्वालिटी में थोड़ा प्रॉब्लम था छे। ओके sir, on BOS subject wise recording list is available. Yes, subject wise recording list on BOS app, I think. In BOS app you have that recording. Yes. डिस्क्लोजर में कौन से स्टैंडर्ड्स आते हैं? तो बेटा 1 तो था, 17 है, 18 है, 24 है, 25 है।
17 के बाद 20 पढ़ेंगे, 18 एंड 20 पढ़ेंगे, 24 एंड 25. So these are defectively. Very good. Gives the detailed information about the different product produced by the firm in a different way. Yes, very good. Sumanji, to understand the entity's profitability and loss making business. प्रोडक्ट वाइज बोल सकते थे आप. यस सुमन जी, प्रोडक्ट वाइज. Bhavika is saying transparency, comparability, segment wise profit or loss, statement of knowledge of business company. Very good बेटा, very good. चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा चतुर लैंग्वेज में देखेंगे. So what are the benefits? Benefits number one, better understanding of the performance of the enterprise. But obvious, only net P&L account, profit and loss account, we won't give you overall understanding of the business. But this picture will make it very clear how you are going to perform. So better understanding of the performance of the enterprise. Second one, assess the risk and returns of the enterprise. Risk है तो returns छे. Finance का पहला वर्ड. और risk and returns of the enterprise you can easily find out by using segment reporting. Make more informed judgments about the enterprise as whole. Make more judgments. Okay, sir. We are getting all these points. Okay, at the end I will give you time to take screenshots. So first try to understand it. तो एक बार हिंदी में बेटा बहुत बढ़िया तरीके से आपको बिजनेस समझ में आएगा. सेगमेंट रिपोर्टिंग आपने किया होगा तो सेगमेंट का इंफॉर्मेशन अलग अलग देने का फायदा क्या होगा? सेगमेंट का इंफॉर्मेशन अलग देने का फायदा एक ही होगा ताकि आप लोग जो है बिजनेस जो है उसको और अच्छी तरीके से समझ लो. हर प्रोडक्ट के बारे में रिस्क एंड रिटर्न आपको समझ में आएंगे एंड आपको इन्वेस्ट करना है क्या नहीं करना है. जजमेंट आपको समझ में आएगा. भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में आप अच्छा खासा प्रॉफिट एक इसमें कमा रहे हो पर बाकी इसमें बहुत लॉसेस कर रहे हो तो आप लोग एक जजमेंट ले सकते हो ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है क्या नहीं करना है. एंटरप्राइज एज होल या मैनेजमेंट भी ये डिसीजन ले सकती है. मैनेजमेंट भी फायदा होगा, शेयर होल्डर को भी फायदा होगा, हमें ओवरऑल पिक्चर समझ में आएगा. बेटा ये कैसे हो गया? घर में आपके 5 सेगमेंट्स हैं. घर में 5 सेगमेंट्स है मतलब क्या? आपकी मम्मी है, आपके पापा है, आप हो, आपकी बहन है और सपोज मेरे केस में बेटा दक्ष भी होगा, आपके केस में नहीं होगा. जो भी बच्चे मतलब पढ़ाई अभी 20-25 साल के हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट तो अभी क्या होगा सेगमेंट वाइज. अभी हमारे घर का खर्चा सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ 30,000 हमारा मंथली एक्सपेंडिचर होगा. अभी 30,000 में से बेटा मेरे मम्मी का खर्चा सपोज 5-6 हजार है. हाँ, मेरे बीवी का खर्चा बेटा 20-1 हजार है. दक्ष का खर्चा 4 हजार है. मेरा खर्चा 500 रुपया है. तो ये क्या होगा? ये ओवरऑल सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन हमें मिल गया. तो ये क्या होगा? ओवरऑल एक्सपेंडिचर वोंट क्लियर द पिक्चर बट आपका फैमिली के मेंबर वाइज खर्चा आपने एलोकेट किया तो वो ज्यादा समझ में आएगा. आपको समझेगा अरे संकेत सर की तो जरूरतें बहुत कम है, 500 रुपए में पूरा घर निपटा देते हैं, उनका खर्चा जो है भैया तो बाकी लोगों के लिए कमाना पड़ता है. तो ये क्या हुआ? मोर इन्फॉर्म जजमेंट्स. ओके हाँ जी बेटा, तो ये समझ में आया होगा. इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स. वीडियो क्वालिटी ब्लर आ रही है ऐसा बोला जा रहा है. वीडियो वीडियो क्लैरिटी. मनीष जी, मनीष जी वीडियो क्वालिटी पुअर आ रही है ऐसा बोलना है. एक बार चेक कर लीजिए, रिजोल्यूशन चेक कर लो. मेरे साइड से इंटरनेट का स्पीड तो देख रहा हूं मैं. एक सेकंड स्पीड देख लेता हूं. 325. I don't think that I have some video clarity problem. First thing, make sure पेज नंबर के ना. यस, वीडियो क्लैरिटी बहुत खराब है क्या? चेक करो एक बार. आई विल चेक इट आउट. रिजोल्यूशन होता है इन दैट यू कैन टेक higher data saver, higher picture. Yes, now it's very clear. I can find out it very simply. Yes, you can check here. Okay. मुझे नहीं लगता है कि वीडियो के क्लैरिटी में कोई दिक्कत है. चलिए,
सो रिजोल्यूशन को थोड़ा बढ़ा दीजिए बेटा, साइड में रिजोल्यूशन होता है, सेटिंग्स में जाके चेंज करवा दीजिए. बिजनेस सेगमेंट. फर्स्ट थिंग, मेक श्योर व्हाट इज द बिजनेस सेगमेंट. सर, यस, बिजनेस सेगमेंट. Distinguishable component of an enterprise. Distinguishable component of an enterprise engaged in providing an individual product or service. Sir, business मतलब products or services separately देना है. In ITC report we have seen FMCG, okay, tobacco, then you have seen that paper. Third one क्या क्या था? I think 4-5 थे. सीमेंट भी था शायद से, मैं भूल गया. नहीं, सीमेंट नहीं था. ओके, क्या था? चलो याद करो. सो आई हैव शोन यू ना दैट पेपर. यस. एंड प्रोडक्ट वाइज जब इंफॉर्मेशन देते हो, एंड रिस्क एंड रिटर्न्स फ्रॉम different from other business segments. So risk and returns of every business are different. Okay. For example, yes, I already told you how risk and returns are different. For example, in this my profession of teaching, my risk, what is my risk beta? Risk is that his student will come or not, that I am not aware. So that is a risk. And returns, but obvious, we have very less expenses because this is a professional service that I'm providing. So my material cost is almost zero. My labor cost is always there. Yes. And but obvious, my professional fees will be on the higher side. So सबसे best business, class business, but risks are more. Okay. Because student आएगा नहीं आएगा, आपके trust रखेगा नहीं रखेगा, that is a different part. Second one, second business, restaurant. Restaurant business में material cost is almost 50% and my returns are better only 20%. 30% labor cost, profit is 20%. Third business I told you, salon ka. So my material cost is almost 10%. What is my material cost? 10%. But what is the risk? To get the labor is very challenging. मैं तो जाके हजामगिरी नहीं करने वाला हूँ. So that will be different part. Okay, थोड़ा हाई-फाई है, पर हाँ जी बेटा, risk and returns are different. Risk and returns are different for that business. Okay, so यहाँ पे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि every business has different risk and returns. And accordingly, my different segments, business segments are different. तो इतना याद रखिए. Distinguishable component of an enterprise engaged in the providing an individual product or service subject to risk and returns are different from other business segments. So ये definition होती है. Got the concept बेटा? Say yes or no. Yes. आगे. Factors consider in determining whether the products or services are related. So business segment की definition you understood. Screenshots I will give you it later on. Okay. So अभी नहीं दूंगा. At the end I will give you. ठीक है. Next. Now. Yes. Factors to be considered. Nature of product or services. Nature of products or services. Thank you, Tiksha ji. हाँ, एग्रीकल्चर बिजनेस था, होटल्स भी था. यस, एग्री बिजनेस था, होटल्स भी था. यस. So what are the factors when you will divide it? So nature of product or services. Second one, nature of production process. So second one is production process. If different, you will consider it as a different product. Okay. So your production process is different. Third one is types of customer. Which type of customer is belonging to which class? So that will decide the product separately. See बेटा, एकदम simple सा example, though it is a funny example. बेटा एक class होगा labor class, which will बेटा what they want, tobacco. Okay. एक class है थोड़ा उससे ज्यादा, वो क्या करेगा बेटा, सिगरेट का क्लास होगा. तो दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर. एंड थर्ड कैटेगरी बेटा उनका चिलिम बिलिम का कॉस्ट होगा. सो नो एक्सपीरियंस, ओनली बेटा आई एम टेलिंग यू अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कस्टमर्स यूर डिफरेंट टाइप ऑफ products. Okay, so your customers are different, your products are different. Okay, so accordingly you will plan your business segment. So your business segments are different. Understood? So types of customer. Aage. Next one. Next one is, Hanji. Next one is what? Methods
of distribution. So your product line. So these are the factors you may consider while dividing your segments. Okay. Ultimately, who will give the information? Your management is only going to give you information. See, we are chartered accountants. We are not, management के team का हिस्सा है हम लोग. We are only बेटा here. They will give us information that their internal reporting will give us the information, and accordingly we will classify what segments. We will classify segments, either business or. So it is a judgment based standard. It is not कि might be. My bifurcation might be different from your bifurcation. It's a skill. It's a skill. See, this accounting standard 17 is presented in institute material. Now they have given it in the platform of paragraph form. Okay. They have given it in the paragraph form. Some faculties better, they will give you handwritten notes. Some faculties will give you better directly structure their other type of different presentation. I am giving you different type of presentation. So see, this is ultimately a judgment. How I am bifurcating this accounting standard. So see, similarly, business segment, how to divide. It's a matter of judgment. Okay. So it might be your judgment is different from my judgment. Okay. So presentation may be different for same type of industry people. So Ambuja Cement ka S17 ka presentation might be, though they have this similar competitor in the market, might be Ultratech ka alag ho sakta hai. Got the concept? Okay, so segment reporting is different type of presentation. Yes, next one. बेटा बताता हूं मैं. Yes. Okay. अभी मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोग देखेंगे. नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ रेगुलेटरी एनवायरमेंट. सो नेचर ऑफ रेगुलेटरी एनवायरमेंट might be given you the, yes, regulatory environment means how you are presenting it to government. So that may be give you the factor. It is one of the factor to decide this. Okay, it is one of the factor to decide business segment. So these are some factors which consider while considering different products. So याद क्या रखना है? FMCG, agriculture business, then you have hotels, and last one jo tha, yes, your paper or iska business. Okay, so these are some different categories. Next, important terms. Yes, any queries? कोई भी एक चलेगा बेटा. सोलंकी जी, एनी वन ऑफ द फैक्टर, ऑल फैक्टर्स नहीं, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर यू विल कंसिडर. Georgie Ajay from South. Hello, sir. You are such a good influence. After hearing your daily routine last class, I also decided to wake up early in the morning and go to the gym, and your classes are interesting. Thank you, beta. So nice of you that आप एक किसी को फॉलो कर रहे हो, वो भी बड़ी बात है. डेली बेसिस पे करना बेटा, एकदम बिल्कुल में कंसिस्टेंसी से करना. जैसे अपने आईसीआई के क्लासेस होते, मैं छुट्टी मारता हूं क्या इससे क्लासेस में? नहीं, रोज के रोज नहीं रहेंगे, 4 days in a week, बट कंसिस्टेंटली आई एम टेकिंग इट फॉर 2.5 hours कंटिन्यूअसली. सो मेन कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट. चलिए सर, व्हाट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अनमोल, consolidated means holding company and they have different subsidiaries. Suppose I have investment in 50% shares of any other company, so I have to present books of accounts together, which is called as consolidation. So consolidation I will teach you in the I think module number different है उसका, third module. So beta wait for some time. We are going to start with the consolidation, but after completion of the remaining standards. Okay, so keep patience. It's a different part. Okay. No. Sir, whether we change the bifurcation yearly? No, beta. Consistency is important. And if you think for better presentation, then you can change it. Okay. Now, what is geographical segment? Geographical segments, distinguishable components. So this is also distinguishable component. Engage in providing individual product or service, but wait,
that subject to risk and returns are different from those of components operating in economic environment. Sir, economic environment is different. Geographical means it might be southern region, northern region, eastern, western. It might be in India, outside India. It might be in Europe, Asia, America. Yes, beta. So ये जो है ना, that different geographical components. Okay. So see, beta, Asian countries, beta, their culture is might be similar one. And वही Western European culture might be different one. American culture might be different one. So economic environment are different for different countries. So within India or outside India, bifurcation, or in Asia or in Europe, or it might be categories will be different. Or even in India, we have urban and rural. Okay. Even in India, we have eastern, western, southern, north. Okay. So ये जो bifurcation है ना, that is a geographical segment, and it is again a matter of judgment how you are going to present it. How you are going to present it. Understood? Okay. Yes, sir. Please explain in Hindi also. But a geographical segment ये होता है कि भाई इकोनॉमिक मतलब पैसा, और पैसों का जो वातावरण होगा, एनवायरमेंट होगा, उसके हिसाब से, जैसे पैसों में अर्बन के लिए पैसा अलग लेवल पे होगा क्योंकि अर्बन लेवल पे लेबर कॉस्ट ये महंगा होगा, और रूरल में बेटा लेबर कॉस्ट ये सस्ता होगा, माइट बी, या रूरल में रिसोर्सेज जल्दी पहुंच जाएंगे, खेती में से डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, तो उनका इकोनॉमिक एनवायरमेंट अलग होगा। तो वहां पे जो आप दूध बेचने की कंपनी है, तो आपका रूरल और अर्बन ये दोनों अलग अलग हो सकता है। आप खेती कर रहे हो या खेती से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, सो उससे रिलेटेड खेती से डायरेक्ट बेटा रूरल एरिया से माल जल्दी पहुंचेगा, अर्बन एरिया में वही प्रोडक्ट आप महंगा बेच रहे हो। तो ज्योग्राफिकल में आप कैसा ले सकते हो, अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया, इट माइट बी पॉसिबल, या इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, या आप लोग रीजन वाइज भी कर सकते हो बेटा। सो ये इकोनॉमिक एनवायरमेंट, अभी कोई प्रोडक्ट जैसे कि उत्तप्पा डोसा जो है वो साउथ में ज्यादा चलेगा, वही महाराष्ट्र में थोड़ा कम चलेगा, नॉर्थ में कम चलेगा, तो बेटा वहां पे बहुत वो उनका रोज का खाना रह सकता है। पर हमारे लिए तो आपकी होटल इंडस्ट्री है, तो जहां पे आप लोग साउथ का, और आपका होटल कौन सा बेटा, तो आपका होटल साउथ इंडियन होटल है, तो वो साउथ में ज्यादा चल रहा है, नॉर्थ में थोड़ा कम चल रहा है आपका प्रोडक्ट वाइज, ये भी हो सकता है इंफॉर्मेशन। सो डिवाइड योर इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक एनवायरमेंट, एंड डिसाइडिंग फैक्टर अगेन इट्स यूर जजमेंट, ये आपका जजमेंट होगा कि आपको ये डिवाइड कैसे करना है। गॉट द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा? यस और नो? यस। तो फैक्टर्स अगेन, currency regulations, relationship between operations, then you have next one is proximities matlab samantarta of the operations, proximities. Then you have spatial risk involved, and last one, exchange control regulations. So these are some factors. One of the factor you will decide currency regulations and all while deciding it. Okay. So geographical segments के कुछ factors है how to divide your geographical segments. Okay. Understood? Geographical segment is always based on either location of production or services or facilities and other assets of an enterprise, location, or location of the customer. It might be your enterprise location or it might be your customer's location. Distinguishable component means what? You can identify it separately of an enterprise. You can identify your component separately. Okay. Your business, you are running business under different product. You are बेटा giant बोल सकते हो, या आप आपके बिजनेस के किंग हो, but you are different businesses, but every business component is different, is called as distinguishable component. You can distinguish, you can identify it separately.
चलो नेक्स्ट वन, प्रॉक्सिमिटीज को बेटा हिंदी में मैंने बोला ना समांतरता या दिशाएं बोल सकते हो आप, तो उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमिटीज। Business segment we have finished with. Geographical segment finished. Now, हाँ जी. If risk and returns are effects for difference in the products or services, it is called as business segment, and operations in the different countries, then beta it is called as geographical segment. So we are already aware about these two segments. I already taught you these terms. Huh? Reportable segment. Now this is right term our point. What are reportable segments? Reportable segment means beta for which you are going to record as per S17. So we have this criteria, threshold limits. Limits are there. Segment revenue. Now what is segment revenue? Revenue means turnover. Turnover directly attributable or allocable. Now what is allocable data? We will see what is allocable on the reasonable basis. Revenue from external customer and even revenue from internal segment transfer. Internal segment transfer. So external plus internal. So if I'm providing any goods to my other segment, it is also called as sales. Inter-segment sales. And see, profit margin for external segment might be different from profit margin from internal segment. Okay. Example. See, क्लोज कर रहे हैं. See beta, suppose in my business, my external customers, I'm selling goods at cost plus 50%. 50% is my margin. Okay. One minute. For external customers is cost plus 50%. And for my internal segments, so I have 5 divisions, A, B, C, D, E. I'm selling A to C, my cost plus 5%. So it's allowed. I'm collecting 5% profit only, which is called as internal profit here. Finally, we will eliminate internal profit, but you can transfer at different prices. It's allowed. And in revenue, you will consider this 50% also, and you will consider this cost plus 5% also. Revenue wise, you can transfer at different amounts. Okay. So revenue considers both external customer also and internal customer also. Segment. But when you are calculating overall enterprise revenue, see, overall enterprise revenue is from external customers only. Is from external customers only. Okay. So internal plus external for segment, and for external, if it is revenue from sales to external customers. Segment revenue excludes extraordinary items, interest or dividend income, and gain from sale of investment
unless nature of business is investment activity. So you should not consider this. Sale of investment वगैरह. Yes. Segment expenses, same definition. Directly attributable expenses plus allocable segment on a reasonable basis and expenses due to transaction with other segment enterprises. Segment expenses. Segment expenses does not include extraordinary items, loss on sale of investment, same thing, cost of enterprise level, income tax expense. See, income tax expense, we have question on this. Income tax expenses are not considered. Income tax expenses are not considered, and interest expenses, including interest on advances from other segments, are also not considered. Advances which are given to other segments and the interest you will charge is not considered. This is IMP1. What? Read it better carefully. Chalo, read it. Jaldi se read कीजिए. इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे. थैंक यू बेटा अनु. इंटरनल सेल्स, रोहित, अनदर एस ऑल्सो. यस बेटा, यस बेटा. अविनाश, यू आर करेक्ट. प्रीडोमिनेंट मतलब बेटा जो डोमिनेट करेगा, फैक्टर. प्रीडोमिनेंट मतलब वो जो फैक्टर दूसरे पे डोमिनेट करेगा. डोमिनेंट मतलब क्या बोल सकते हैं डोमिनेंट को हिंदी में हम लोग? अभी जैसे कि मेरी वाइफ मेरे ऊपर डोमिनेट करती है बेटा कोई भी डिसीजन में, डोमिनेंट फैक्टर. Yes. But we will solve one question, so you will find it very simple. Segment result means what? Is revenue minus expenses. Simple. Revenue minus expenses is segment. Segment assets. Operating assets that are employed by a segment in its operating activities that are directly attributable to segment and allocable on the reasonable basis. Okay, beta. We are going to solve this question. Don't worry. It includes receivable loans, including the segment result. Income tax expenses, हाँ जी बेटा, income tax expenses exclude करना. An asset used for general purpose, so वो enterprise का है. Segment liability also same definition. Same definition. Notes. In some cases, however, a revenue expenses, assets or liability may have been allocated to segments for internal financial reporting purpose on the basis of it's understood by the enterprise management, but that could be deemed arbitrary in the perception of external users of financial information. Might be sometimes internal information, it might be for internal uses. Don't consider it in your segment reporting. ठीक है. Treatment of interest, not a part of segment expense. Example, interest on overdraft or interest on other operating liabilities identified to a particular segment. Exceptions, if it is compulsory that finance you are taken for segment only, for finance is taken for that segment, then we will consider it. Amount of such interest you have to disclose it separately. So interest cost आपको separately disclose करना है. Deciding primary or secondary factors. प्राइमरी है क्या सेकेंडरी है? डोमिनेंट सोर्स क्या है चेक करो. एंड नेचर ऑफ रिस्क एंड रिटर्न्स ऑफ एन एंटरप्राइज. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज डोमिनेंट? यू हैव टू डिसाइड वेदर बिजनेस segment is dominant or whether geographical, and accordingly you will record it. Risk and returns affected by Rattamar definition है. Difference in the products or services, operations in the countries and geographical areas, both evidenced by the matrix approach. Primary format business segment होगा, then geographical segment, and then so business segment ये आपका primary होगा. Secondary में कौन होगा? Geographical. Geographical and then business segment. ये याद रखो. Matrix presentation जो already मैंने सिखा दिया, when both applicable होगा तो. Yes. ये ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. स्टेप्स एंड ऑल इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. Yes. Identify reportable segment.
Now there are 4 tests. Revenue test, this is IMP point. हो गया. Standard is almost over beta. We are going to solve this through example. Okay, चलो एक काम करो. You take a screenshot. मैं आपको criterias बताता हूँ. Yes, criteria you are already aware. चलो, you take a screenshot now. Yes, I will give you screenshot के लिए time. All important points we covered. Only 75% criteria रह गया. Yes, you take a screenshot. चलो, screenshot लो, and we are going to solve some questions. Okay, question through you will get more clarity. Screenshot लीजिए. I will count for 5. Next. Take a screenshot, beta. We are going to solve questions. Segment expense. Segment expense. Result. Assets. Liabilities. Risk and returns. Revenue test. Asset test. You have to write it in 100 pages book. Please write it carefully. Deciding primary and secondary segment. Matrix presentation. Bus. Over. How many pages you will need to write this accounting standard? I will show you. You can check Tamanna's notebook. How beautifully she has written it. She started from, yes, you can check here. On 13 September, we have finished this chapter. 1, 2, 3, 4, yes, 6, 7, 8 pages. So you have to write today minimum 8 pages better, and we are going to solve some questions. Don't worry.
Yes, now waiting for your questions, otherwise we'll start with study material questions. Yes, index के साथ शुरू करेंगे आज. Cost to the enterprise 75%. I will explain it. सर एस3 कब पढ़ाएंगे बेटा? एस3 में आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर 11 में पढ़ाऊंगा. चैप्टर नंबर 11. This you have to write it in 100 pages book. Okay. Chalo. So I don't think it is very simple. We have to complete almost 7 to 8 questions. Yes. Index बना लो पहले. हाँ जी. At least finish your index with me. हाँ जी बेटा. इंडेक्स को आप मेरे साथ लिखो. डिस्टिंग्विशेबल, एक्सटिंग्विश ऑफ डेट्स मींस डेट्स का फिनिश होना बेटा. ओके बेटा, स्क्रीनशॉट्स के लिए टाइम दूंगा. अच्छा, 400 पेजेस का बुक है. अच्छा, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट. इंडेक्स का स्क्रीनशॉट. 400 पेजेस बुक. दिस वन. कैटेगरी इज इंपॉर्टेंस लेवल. If A category beta, it is important. B category, moderate. C category, okay, not important. Z is faltu. So there are 4 categories. Yes. 6 TYK questions. Yes. So these are TYK questions. Beta, we will solve each and every question. Don't worry, we are going to discuss it in the class. What is important in S17? Some Rattamar points. Yes, I forgot to give you Rattamar points. अरे यार, ठीक है. You note down all these things. Rattamar points I will give you tomorrow. Rattamar points, you write all these notes, and Rattamar we will write it separately. Okay, tomorrow after completion of your 100 pages book. But make sure that you are maintaining your notebook properly. See, after 4 months, everything, listen it carefully, everything will be blank. And it's not possible to read study material after 4 months. After 4 months, it's not possible. You have to finish your syllabus within time. You have to give both groups. You don't have to give only one group. See beta, it's very important that you will give both groups and not a single group. Single group कुछ काम का नहीं आएगा बेटा. वैसे भी आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं होगी. डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स और foundation students, one request to all of you. Don't think for a single group. I have given you many techniques how to recall it. Maintain 100 pages book separately, 400 pages book separately. I am giving you Guru Mantra series on my channel. उधर मैं आपको मेरे हिसाब से दूंगा. यहाँ पे बेटा क्या होता है कि I cannot upload all information. Sometimes तो मुझे वो मेरे चैनल थ्रू करूंगा, नहीं तो पिंपरी चिंचवड़ के चैनल थ्रू. तो कभी कभी कैसा होता है, अपने आप में रिस्ट्रिक्शंस आ जाता है हर चैनल वालों को.
यस, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छा खासा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, it's not applicable only for my subject. You do hard work for all other subjects. Those students who want to interact with me, not by board of studies app, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो. Yes, by Pimpri Chinchwad branch through, because I'm not taking any private classes. Yes, I take classes only for institute, either for head office or for branches. Okay, so I'm running this activity with Pimpri Chinchwad branch. You can join there if you want Zoom sessions and if you want Sanket sir's personal advice over there. But these classes are conducted in Hindi, तो वो उन्हीं को फायदा होगा जो हिंदी में जानना चाहते हैं. ओके, तो मैं आप लोगों को इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्लासेस जो है वो वहां पे हिंदी में रहेंगे, पर वहां पे आपके सेपरेट एप्लीकेशन पे रहेंगे. ये जो है वो हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज के एप्लीकेशन पे रहेगा. यहाँ पे वी कैनॉट listen your voice because it's not practically possible. Okay. Next. Sir, is it necessary to by heart all the theories? No, beta. I will give you some important points which have to be by heart. So Rattamar points, which I call it as Rattamar points, hardly one page. Hardly one page Rattamar point for every standard. Okay. Sir, Bhavika Kumari, it's a branch. Pimpri Chinchwad branch is a near to Pune. So we have a separate, Pimpri Chinchwad branch over there. Chaliye. So let's start with module illustrations now. Okay, I will show you the answer also. Mansi, now I will take your question afterwards. हाँ, A17 में आ जाओ. Page number. We already covered 10% test. We will solve one more question, okay, for 10% test. So today's session will start with the one more 10% test. See, 10% test for result. So what is a test? 10% की टेस्ट क्या बोलती है? Split in Hindi also. Now we are starting with questions. Say TYK 9. Come to TYK 9. Page number 4.6. TYK 9. Page number, you can write like this, 4.6. Afterwards, take a screenshot. We can write it afterwards. XYZ Limited has 5 business segments. How many business segments? 5. Five business segments. Profit or loss of each segment for the year ended 31st March 2002 have been provided below. You are required to identify from the following whether reportable segments are not reportable segments. So what is the criteria? Let's try to understand the criteria. If segment result, whether profit or loss. Now see beta, here these two are in profit. So what is my profit? Segment A, B and
Segment A, B are in profit. Okay. 225 plus 25. And what is losses segment? C, D, E are my losses segment. Tell me profit का total. Tell me profit का total. Profit का total बोलिए फटाफट. हाँ. What is my profit total, beta? 250. And what is my losses का total, beta? Losses total is, who got the answer? 330 रे loss का 300. I will convert it into absolute term. Absolute means positive 300. Whichever is higher. And for that, you will consider 10%. So more than 30 or 30. 30 or? Yes. No. More than 30. Yes. No. Yes. So A, C, and E are reportable segment. A, C, E are reportable segments. Okay. ठीक है बेटा. TYK 9. Yes. Understood or not? Understood or not? And you finish it now. Similar question. So 10% criteria. You finish with 10th number now. Same question. TYK 10. You understood it or not? Okay. Sir, do we have to take screenshot? No, beta, not now. I will give you time to take screenshot. It's simple. अरे बेटा एक बार हिंदी में बता देता हूँ. देखो बेटा. Yes. आपको क्या करना है? You have to take. आपको प्रॉफिट वाले सिलेक्ट अलग करने हैं. प्रॉफिट वाले अलग से सिलेक्ट करने. 225 प्लस 25. तो कितना आया? 250. और निगेटिव वाले आपको अलग से सिलेक्ट करने हैं. लॉसेस वाले. तो लॉसेस वाले कौन कौन है? 175, 20 एंड 105. फिर लॉसेस वालों का टोटल -300 आया और प्रॉफिट वालों का टोटल 250 आया. तो -300 को एब्सोल्यूट टर्म, एब्सोल्यूट मतलब अभी हिंदी में मैं नहीं जानता हूं, एब्सोल्यूट मतलब उसको कन्वर्ट करना पॉजिटिव फिगर में. तो 300. अभी 300 और 250 में कौन हाइयर है? तो 300. अभी 300 का 10%. ये जिसका रिजल्ट मतलब 30 लाख से जिनका भी प्रॉफिट ज्यादा होगा या लॉस ज्यादा होगा 30 से ज्यादा, तो वो आपकी रिपोर्टेबल सेगमेंट है. मतलब आपको रिपोर्ट करनी है, आपको शेयर होल्डर को बताना है कि ये मेरा सेगमेंट है.
उसको बोलते हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट, उसको बोलते हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट। आया समझ में? सो अभी देखो, ए सेगमेंट को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, आपको शेयर होल्डर के इसमें बताना पड़ेगा कि ये सेगमेंट है। बी को जरूरत नहीं है, सी यस, क्योंकि 175 30 से ऊपर है। बी 20 है, डी नहीं, तो 105 यस 30 से ऊपर है, तो ई को हम लोग प्रेजेंट करेंगे। सिंपल। 9 नंबर, वेरी वेरी इजी। अभी ऐसा ही 10 नंबर का है, सॉल्व कीजिए। 10 नंबर, पॉजिटिव वाले ये है एंड निगेटिव वाला ये है, राउंड किया हुआ। पॉजिटिव वाले बॉक्स में है, निगेटिव वाले बॉक्स में नहीं है, राउंड में है। यस, टेल मी, किसका 10% आएगा? किसका 10% आएगा? यस, राइट द आंसर इन कमेंट सेक्शन। 10% ऑफ व्हाट? एकदम सिंपल है बेटा। माधव का तो 10वां नंबर भी हो गया, माधव का तो 10 नंबर भी हो गया बेटा। वेरी गुड माधव जी, वेरी गुड। हम्म, इजी। यस, इजी है क्या बेटा? चेक करो। सेम आंसर यू आर गेटिंग। नॉट 82.8 बेटा, 828। वाह 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 वाह, वेरी गुड। एवरीवन इज सॉल्व इट करेक्टली बेटा, एवरीवन सॉल्व इट करेक्टली। यस, सो आंसर इज 828। 828। नेक्स्ट वन, one more question. See, I already explained you. In internal segment plus external, you will take a total. Internal plus external, total revenue, then profit or losses, 11 number. Okay, so first you take a total over here, and then tell me which one is reportable. I am giving you time. 10% of revenue, 10% of profit or loss result, and 10% of asset. Which one is reportable? Which one is reportable? Yes, tell me. चलो फटाफट बोलो, which one is reportable? Take a total revenue 4,200,
plus 12,300, 16,500, 3,500 plus 7,750, 11,250, 4,500, 5,250, 6,000, 2,250, 45, 750. So here the answer is more than 4,575. Yes, yes, no, no. 2,250 loss and profit is 6,000. So 600 is the answer. Yes, 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 and yes. So profit or result, all are reportable. And assets, 10275. Yes, 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 and no. So more than 10,275 are reportable. And accordingly, all segments are reportable. All segments are reportable. Got the concept, beta? Say yes or no. बोलो जल्दी से. बेटा नैन्सी सक्सेना, देख बेटा, जब हम लोग सेगमेंट का रेवेन्यू का डेफिनेशन देखते, रेवेन्यू रेवेन्यू के डेफिनेशन में आपको इंटरनल प्लस एक्सटर्नल ये दोनों ऐड करना है, और ये दोनों का जो टोटल होगा उसमें से जो 10% के क्राइटेरिया में आएगा सेगमेंट का, जब यू आर कैलकुलेटिंग एंटरप्राइज रेवेन्यू, यू वोंट कंसीडर internal enterprise overall, but you consider when segment revenue considers internal plus external. Now you got the concept. Yes. And how to present the answer? You have to present this answer similar to ILU 1. Similar to ILU 1. Okay. Similar to ILU 1. So it's like revenue test, result test, asset test. Okay. And all segments are covered at least 1 month criteria. One of the criteria, all segments are reportable. All segments are reportable. This is how you have to present your answer. Okay. अभी भी डाउट है क्या? ममता यादव, इट्स वेरी सिंपल बेटा.
कौन है? आगे, come to illustration number 12. Come to illustration number 12. How to calculate segment result? How to calculate segment result? Let's try to understand. Segment result is segment revenue minus segment expenses. Now, number A, segment revenue. See how to solve the question. Directly attributable revenue is number 1. 5 lakhs, 3 lakhs, 1 lakh, and 9 lakh. Enterprise revenue allocated. Allocated 5:4:2. So divide by 11 कीजिए into 5 is equal to 4 is equal to and 2 is equal to. Calci shortcut. 5 plus 4, 9 plus 2, 11. So 11 is your denominator and numerator is 542. So this is 50,000, 40,000, 20,000. Then beta, intra-segment transfer is also part of revenue. So revenue from transactions with other segments. 1 lakh, 50,000, 10,000, 50,000, and 25,000 and 1 lakh. Okay. Now we will take Roman 4 total. Take a total. 5 lakh plus 50 plus 100 plus 10. 6,60,000. 300 plus 40 plus 50 plus 25. B, segment expense. Same thing you have to do. Yes. Now you do for segment expenses. Now divide by 11 into 5 is equal to. Chalo. Do it. Segment expense karo beta. And then take a total. And then see result. A minus B. Take a total beta. %75 beta, I will tell you. Don't worry. You take a total and tell me result. Total and result is your answer. Yes. Tell it in the comment section. चलो जल्दी से comment section में बताओ. What is the answer?
Yes, beta. What is the final answer? I want segment result का final answer. Four lakh 16,000. See, the answer is 2,36,000, 2,01,000, and final answer is 244, 179, 69, and 4,92,000. This is how you have to present the answer. Instead, ask you about only result. Yes. So you are getting the result 2,44,000, 1,79,000, and 69,000. After the break, I will tell you criteria of 75%. So wait, in after break, we are going to start with new concept, that is 75% criteria. I will explain it in detail, and some points I can correlate it now with your previous examples. So these are the questions where results are important. 10% criteria, revenue, result, and assets. And in revenue, you will consider internal plus external sales. And we'll see it once again after the break. Take a break and join fast. Okay. After 15 minutes, break will be up to 7:40. ब्रेक ले लीजिए.
Chalo, let's start with beta other illustrations. Before that, beta, we have to understand the theory part. 75% criteria. Chalo, join fast. Yes, I hope कि everyone has their food और dinner हो गया होगा. Have taken your dinner, beta? All of you. थोड़ा जल्दी खाया करो. At least 2 hours difference. Yes, beta Rishi, I will check it shortly. Evening, beta Tiwari ji. See, welcome back, welcome back, welcome back. चलिए. See revenue test. See revenue test. A business segment revenue, external plus internal. External plus internal is greater than 10% or equal to of total revenue of all segments, internal plus external. Understood this test? In exam, you have to write it in the same way. It's a ratta maar. Result test. Segment results profit or loss is greater than 10% into higher of. Consider in the absolute amount the combined result of all segments in profit or combined result of all segment in losses. Today I'm not going to start with accounting standard 18. Today we will finish S17 in detail. Okay. Next, asset test. Segment assets is greater than 10% of total assets. And now we have to understand 75% test. Total enterprise revenue. %75% if total external revenue, if external revenue of reportable segment from above 3 tests, if reportable segments revenue, for example, ABCD, EFG, beta, out of this, A and B are reportable segment, assume. C, D, E, F, G are non-reportable segment. Non-reportable segment. Okay. If you take a total of their external sales, only external sales, in that case, their external sales total 30 plus 40, it's a 70%. And what is the criteria? Criteria is their external sales must be greater than 75% sales. So whatever reportable segments, their revenue from external plus internal, no. See, for 75% test, only external. And for 10% test, internal plus external.
Internal plus external, you have done it now only. You have done it external plus internal. अब भी तो किया ना आपने. Here, this is internal. You have taken a total also. You have taken a total also. Inter plus external. So see, for 10% criteria, we will consider both internal and external. But for 75% criteria, we will consider only and only external sales. एक बार हिंदी में. And one more point. Yes, I will explain it in Hindi later on. And if your total is 70%, then you can choose 5% by your own. You choose only C, allowed 78%. You choose D and G, allowed. Or you choose only E or only F. Or you can consider D plus E also by your own. It must be greater than 75%. It must be greater than 75%. I hope you understood it. So 75% is the overall criteria for reportable segments. External sales must be greater than 75% of enterprise revenue. Hindi mein. Management by discretion. If all about tests are not satisfied, management may designate any reportable segment despite of its size. Hardly 2% को भी reportable में ले लेगी and 3% add करके भी reportable में ले लेगी. It's a management choice. If they have not taken D plus G. सी बेटा अभी एक बार हिंदी में बताता हूं. देखो आपने 10% का क्राइटेरिया किया A, B, C, D, E, F, G. 10% के क्राइटेरिया के हिसाब से रेवेन्यू टेस्ट किया, एसेट टेस्ट किया और रिजल्ट टेस्ट किया और आपको 2 ही सेगमेंट्स मिले जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स है. कौन से 2 सेगमेंट? बेटा मैं बहुत स्लोली जा रहा हूं क्योंकि ये क्राइटेरिया थोड़ा मुश्किल है. यू नो संकेत सर का स्पीच कब ऊपर जाता है कब नीचे आता है. जब कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो सर बहुत स्लो रहते. तो आपने 10% का क्राइटेरिया फुलफिल किया. 10% के क्राइटेरिया के हिसाब से यू गॉट ए एंड बी आर रिपोर्टेबल सेगमेंट. ए और बी क्या है बेटा? रिपोर्टेबल सेगमेंट है. अभी क्या किया आपने? रिपोर्टेबल सेगमेंट है पर एक क्राइटेरिया आया 75% का. पर ध्यान में रखिए बेटा 75% मतलब आपको जो रेवेन्यू करना है वो बाहर वालों से कमाना है. घर में ही घर में पैसा नहीं चलेगा. ए बी को ट्रांसफर नहीं करेगा, बी सी को ट्रांसफर नहीं करेगा. ए जो है ये खुद का खुद रेवेन्यू कमाएगा. बढ़िया बात है सर. क्राइटेरिया अंडरस्टूड. पूरा क्राइटेरिया दिमाग में बैठ गया. तो आप आपके घर में जब सेल्स करोगे तो वो कंसिडर नहीं करना है. मतलब ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट वो अलाउड नहीं है. मैं 10 बार आपके दिमाग में डाल रहा हूं ये. अभी आपने जो सेल्स किया बाहर वालों को उनकी टोटल आई 70%. A17 क्या बोल रहा है? A17 बोल रहा है अब 75% तक जाओ और जब तक 75% होते नहीं है मतलब तब तक आप रिपोर्टेबल सेगमेंट आप आपके चॉइसेस से बढ़ाओ. सर ए और बी तो सिर्फ 70% क्राइटेरिया में आए तो हम लोग अभी रिपोर्टेबल मैनेजमेंट की इच्छा अनुसार रखेंगे. सी सेगमेंट बाहर वालों को कितना माल बेच रहा है? 8%, डी 2%,
ई 9%, एफ 8% एंड जी 3%। मतलब कोई भी सेगमेंट 10% में तो नहीं आ रहा है, और इनकी टोटल हो गई 70%। और कितना परसेंट चाहिए? 5%। सर सी को ले लो, यस ले लो। सर डी को नहीं चलेगा अकेले, क्योंकि 5% के लिए सिर्फ 2% आ रहा है, तो डी के साथ आप जी को ले लो इधर। सर मुझे सी भी बताना है और ई भी बताना है, मेरी इच्छा है दोनों बताना, बताओ। मुझे सभी रिपोर्टेबल करना है, रिपोर्ट बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा रिपोर्ट, इतना काय को लेना है। मुझे लग रहा है सब सी सी बताना है, अलाउड है। सर सी प्लस ई करना है, अलाउड है। सी सब ई चलेगा, अलाउड है। सर डी सिर्फ नहीं, 2% मतलब और 3% चाहिए, 75% का क्राइटेरिया है। सर ओनली जी नॉट अलाउड। सर जी और एफ अलाउड, 11% आ रहा है, 5% की जरूरत है। सर सभी को भी ले सकते हैं, हाँ जी। बड़ा रिपोर्ट बनेगा तो बोलना मत, सिर्फ मैनेजमेंट की चॉइस है। यस, क्लियर हुआ पिक्चर? 75% में, यस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 10% एंड 75%? Yes. If reportable segment is less than 70%, we can choose by own. बड़ा ए ऑलरेडी था, ए तो 10% से ऊपर आ रहा है, तो ए ऑलरेडी है। वाई ए मतलब कार्तिक, कार्तिक। ए तो ऑलरेडी है ना, कार्तिक। यस, काइंडली एक्सप्लेन इट इन हिंदी। हरी जी, ओवर बेटा। अंडरस्टूड, आपने हिंदी में बोलने लगाया था। हिंदी वाले समझ गए क्या बेटा पूरा? से यस और नो। दिस इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड टेस्ट ऑफ 75%। थ्रेशोल्ड टेस्ट, थ्रेशोल्ड मतलब लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट होता है। जैसे इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स होते हैं, तो ये लिमिट्स है। कभी स्विमिंग पूल में गए तो लिमिट्स होते हैं उधर, इससे ऊपर मत चाहिए। कितना फीट है? हाँ जी बेटा। फर्स्ट वी डू से 10% एंड देन 75। बेटा मुझे चार्जर दे दे, दूसरा भी चार्जर लेके आओ। यस, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, उधर है वो रूम में। चार्जर। यस बेटा। Now, any other question? Every 10% above is reportable. But obvious. But 10% criteria considers internal plus external. We consider internal plus external. Any difficulty? Any difficulty, beta? No difficulty. Let's move to next point, beta then. ठीक है, चलो आगे बढ़ते बेटा। अभी सी, अभी एक भी क्राइटेरिया ऐसा नहीं है। रेवेन्यू टेस्ट में एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, अंडरस्टूड। रिजल्ट टेस्ट, प्रॉफिट और लॉस, कंसिडर द एब्सोल्यूट अमाउंट, मतलब लॉसेस यू विल कंसिडर पॉजिटिव फिगर्स, एंड द कंबाइंड रिजल्ट्स जो 10% से हाइयर होगा। एसेट में 10% क्राइटेरिया, अभी मेरे साइड से कुछ भी नहीं बचा। एंड मैनेजमेंट डिस्क्रिशन, all points are clear. Yes, if you still have any difficulty, you can ask me. All questions are over, beta. I'm giving you 5 minutes to ask me difficulties.
If you have any difficulty, say डिस्क्रिप्शन, बिजनेस सेगमेंट, जोग्राफिकल सेगमेंट. यस सर. हाँ, अभी ये देखो, सेगमेंट रेवेन्यू, segment revenue, directly attributable segment revenue. So illustration 12, directly attributable revenue. Allocable, allocable means 5:4:2. Allocable plus due to transaction with other segments, due to transactions with other segments. Revenue plus allocable means divide it in the ratio, and inter segment is also considered. तो आपको डायरेक्टली सेगमेंट को जो रेवेन्यू हुआ, ओके, डायरेक्टली सेगमेंट को रेवेन्यू हुआ मतलब ए ने बाहर माल बेचा, बी ने बाहर माल बेचा, सी ने बाहर माल बेचा. कभी कभी सेगमेंट बाहर माल नहीं बेचेंगे, एंटरप्राइज बाहर माल बेचेगा और सब में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो रेवेन्यू. एलोकेबल एंड इंटर, तीनों समझ में आया. एक्सपेंसेस डू नॉट इंक्लूड सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का लॉस, डू नॉट इंक्लूड इनकम टैक्स एक्सपेंस. चलो सॉल्व वन क्वेश्चन. इनकम टैक्स एक्सपेंस. कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 3. इलू 3 4.54. XYZ has 3 segments. XYZ. Total assets. Don't consider income tax assets. Now, what is deferred tax? I will explain it in AS22. Deferred tax is a timing difference asset. No need to understand it now. I will explain it later on. Don't worry. हम लोग बाद में देख लेंगे. The total assets of the company 10 crores. X, Y, Z. 10 crores is a total. 2, 3, 5. Deferred tax asset is 0.5 crores, 0.4, 0.3, 1.5, 2.6, and here 4.7. What is the total? What is the total? Don't consider these assets. 8.8. 8.8 के 0.88 is a 10%. 0.88 से ऊपर है, yes, yes, yes. All are reportable segments. How to present the answer? Answer is like this. Revise total asset 8.8 and convert it into 100. Take on Calci. I will show you the shortcut. So what are the percentage? If you want, you can write percentage. 100 divided by 8.8. 100 divided by 8.8 into 1.5 is equal to 17.04. 2.6 is equal to 29.55. 4.7 is equal to 53.41. All are more than 10%. Otherwise, you can consider more than 0.88. More than 0.88 is all segments. So they are either converted into percentage or consider more than 0.88. More than 0.88. All segments are reportable. You can convert it into percentage. Otherwise, there is no need to convert it into percentage. You can consider directly more than 0.88. Chalo, solve question number ILU 6. Now it's your ILU 6. Solve it. ILU 6 खुद से करो. Deduct this and tell me reportable segments. Criteria for reportable segments and reportable segments. चलो जल्दी बोलो. PQR.
Don't refer over here. Four is P, Q6, R5 minus deferred tax. And consider more than 10%. Yes, easy છે. Yes, what is the answer? What is the answer? PQRR percentage wise. Yes, answer is 24.39. चलो over
Now beta 6 question completed. Now let's move to 7th number. Company A is engaged in the manufacturer and sale of products, which constitute two distinct business segments. Try to understand it quickly. IMP question. It's a different question. IMP. The products of the company are sold in the domestic market only. The management information system of the company is organized to reflect the operating information by two different broad market segments, rural and urban. The management information system of a company is organized to reflect the operating information by two broad segments, rural and urban. Besides the two business segments, how should company identify geographical segment? Do geographical segment exist within the same country? IMP question, beta. I will show you how to write the answer. See, you won't understand it from the study material. What is your opinion? Chalo. What is your opinion? What is your opinion on illustration 7? Yes, beta. Yes, what is your opinion? Very good. Yes, very good. Percentage wise calculate karna. No, beta. I already explained you. If you have different risk and returns within urban and rural, you have to divide it separately. Single geographical segment does not include operations in economic environments with significantly differing risk and returns. Geographical segments may be single country or group of two or more countries and region within a country. It might be in a single country, more than two countries, and region within a country. So I already explained you. Standard requires a judgment to determine the composition of business or geographical segment. See beta how beautifully I have written the answer. In exam, don't write answer in tree diagram. It is only for your conceptual clarity. You write it in exam, try to write the answer in exam, not in the tree diagram, but in the paragraph form. Management information system of company provides segment information. Who provides? MIS. Management. Management will provide you. Chartered accountant has no idea. No? Your business, how I can get the information? I will search it. I will help you out. But ultimately, your reports will help for me to determine segments as a chartered accountant. So it's a management duty. Rural and urban. Geographical segment for internal reporting. Using the information received from the MIS, accountant can decide geographical segments using judgment like different pricing. So different pricing beta.
different credit policies, deployment of resources between different regions, and conclusion. Company A should consider relevance, reliability, and comparability, called as qualitative characteristics. While reporting the segment information, Company A may consider significant risk and returns of operations in economic environment. See, this question is very important. You can take screenshot afterwards. See, IMP question, yes. So you can divide it within a same country. So what is the answer? बेटा एक ही कंट्री में भी आप लोग डिवाइड कर सकते हो यदि आपके रिस्क एंड रिटर्न्स आर डिफरेंट. यदि आपका रिस्क एंड रिटर्न्स आर डिफरेंट, यदि आपके रिस्क एंड रिटर्न्स डिफरेंट है तो बेटा एक बार हिंदी में बता देता हूं. देखो बेटा, सिंगल ज्योग्राफिकल सेगमेंट ये एक स्पेसिफिक रिस्क एंड रिपोर्ट से नहीं चलता, रिटर्न से. सिंगल एंट्री में भी आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अलग होगा तो आप लोग फिर डिवाइड कर सकते हो. रूरल को अलग रखो, अर्बन को अलग रखो, पर इसके लिए मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन जरूरी है. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन आपका सिस्टम जो होगा वो आपको प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन, और उस बेसिस पे आप क्या करना, रूरल और अर्बन में डिवाइड करना. और कौन से फैक्टर्स आपको काम में आएंगे, तो डिफरेंट प्राइसिंग, मतलब रूरल के लिए अलग, अर्बन के लिए अलग. क्रेडिट पॉलिसीज, रूरल के लिए आपने ज्यादा टाइम दिया, अर्बन के लिए टाइम नहीं दिया. डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, डिप्लॉयमेंट मतलब आपने जो रिसोर्सेज ये किए, मैन, मशीन, लेबर, ये जो होते हैं, कैपिटल, ये डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज यूजिंग डिफरेंट रीजन्स. तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है. कंपनी शुड कंसिडर रिलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी. और ये चीजें ध्यान में रखना है कि कंपनी भी क्या करेगा, ये चीजों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग करेगा. इजी था क्वेश्चन. बेटा स्टडी मटेरियल में से समझ में नहीं आएगा, आप लोग स्टडी मटेरियल का एक बार आंसर रीड करियो, फिर आपको समझेगा मेरा महत्व. ओके बेटा, अनमोल पटवा जी, आप ही को माल बेचोगे. फॉर एग्जाम्पल आप देखो, आप हो, ये अनमोल है, ये उसके डैड है, ये उसकी मॉम है, और ये आउटसाइडर्स है. अनमोल, तूने माल डैड को बेचा और माल अपने आउटसाइडर को बेचा. जो भी गुड्स है आपने आउटसाइडर को बेचे या गुड्स डैड को बेचे, बेटा आपको फायदा कब होगा, जब डैड को बेच के फायदा होगा ये, या जब आप आउटसाइडर्स को बेच के. बेटा हम घर में कैसे प्रॉफिट निकालेंगे, तो हम लोग हमेशा आउटसाइडर, एक्सटर्नल सेल्स चेक करते जब एंटरप्राइज का रेवेन्यू निकालते. बट जब हम लोग अनमोल का रेवेन्यू निकालेंगे तो डैड को जो माल बेचा है और आउटसाइडर को जो माल बेचा है वो दोनों कंसिडर करेंगे, और बाद में डैड का सेल्स माइनस कर देंगे जब हम लोग ओवरऑल सेल निकालेंगे. जब हम लोग ओवरऑल सेल निकालेंगे तो अनमोल ने जो डैड को सेल्स किया हुआ है वो सेल हम लोग माइनस कर देंगे. पर जब 10% के क्राइटेरिया के लिए हम लोग डैड का भी सेल कंसिडर करेंगे, पर कंसोलिडेशन के टाइम पे हम लोग डैड का सेल माइनस कर देंगे. यस, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8. ओके ऋतुराज, आई विल चेक इट आउट. चलो 8 नंबर रीड करो बेटा. 9, 10, 11, 12 तीनों हो गए हैं. लास्ट क्वेश्चन है टीवाईके का, और एक दो क्वेश्चंस बचे हैं मेन आंसर के. PK Limited has identified business segment as a primary format. It has identified India, USA, and UK, three geographical segments. It sells the product to Indian market, which constitutes 70%. USA को 25% and UK को 5%. Balance is to the UK. तो ये आपका आइडेंटिफाई किया जोग्राफिकल सेगमेंट. सर जोग्राफिकल सेगमेंट में यूके नहीं आएगा. आंसर हाउ टू प्रेजेंट दिस एज पर एज 17 प्राइमरी फॉर्मेट. Enterprise for reporting business segment, it should also report segment revenue from external customer by geographical area based on location of the customer. Revenue from external customer must be greater than or 10% से of the total enterprise revenue, greater than or equal to.
एक्सपोर्ट सेल्स, एक्सपोर्ट हो गया है, एक्सपोर्ट सेल्स is less than 10%, therefore information should be disclosed other segment if limits are met. Okay, तो ये नहीं करेंगे, ये याद रखो। 5% में यूके का हम लोग नहीं ये करने वाले हैं, यूके को हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे, खत्म हो गया। 6, 7, 8 ओवर। बेटा लास्ट में दूंगा आपको स्क्रीनशॉट्स लेने को टाइम। 5 नंबर का क्वेश्चन, इलू 5। माइक्रोटेक लिमिटेड प्रोड्यूसेस बैटरीज स्कूटर कार ट्रक्स। तो बेटा ये एक आएगा, ये तीनों ऑटोमोबाइल है, ये तीनों भी किस में आते हैं? यू विल बी कंसिडर इट इन ऑटोमोबाइल। एंड इन्वर्टर एंड यूपीएस, it's a different group. UPS and inverters are two different groups. So how many segments are there? There are two segments. How to present the answer? Very simple. How to present the answer? You can check over here. In the case of Microtech Limited, the basic product is batteries. But the risk and returns of batteries for automobile and batteries for inverter by different set of factors. In case of automobile batteries, risk and returns are affected by government policies, road condition, quality of automobiles. In case of batteries for inverter, risk and returns are affected by power condition, standard of living. Therefore, there are two business segments. This is how you will write the answer. But if you don't write answer in such a way, you write only two business segments, you will get only 1 mark. You have to write it beautifully, properly, in paragraph form. Okay, see, I have told you how to write the answer also. तो दो बैटरी का सेट होगा, दो बिजनेस सेगमेंट होंगे, दोनों के रिस्क एंड रिटर्न्स अलग है, और एक का रिस्क एंड रिटर्न डिसाइड करता है गवर्नमेंट पॉलिसी, रोड कंडीशन एंड क्वालिटी ऑफ द ऑटोमोबाइल, दूसरे का करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, चलो। ध्यान में आया? यस। कंपनी हैज इंटर सेगमेंट प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ चार्जिंग एट कॉस्टलेस 10% इंटर सेगमेंट को, एंड मार्केट प्राइसेस आर 25% अबाउ कॉस्ट। अलाउड है क्या ऐसे? व्हाट इज योर ओपिनियन बेटा? चलो लास्ट आंसर। यस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बेटा यूके 5% था ना, हरि ठाकुर जी, यूके का 5% ही था। लिख सका जी? यस, अलाउड, वेरी गुड। तो आंसर टू अलाउड है। हाउ टू प्रेजेंट द आंसर? Company inter-segment transfer pricing policy is different for market price as per S17. Inter-segment transport should be measured on the basis that enterprise actually used to price those transfer. Basis of pricing inter-segment transfer and any change there should be disclosed in financial statement. The enterprise can have own policy for pricing the segments. Yes, however, whichever policy is followed, same should be disclosed and applied consistently. Consistency से apply करो, एंड इसी तरीके से आपको ये करना है। नाउ दिस इज अ टाइम टू टेक स्क्रीनशॉट्स। चलो अभी मेन टाइम है बेटा, प्लीज फिनिश योर होमवर्क। कंक्लूजन डायरेक्टली लिखना है। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के टेस्ट आपके अलग से लिखोगे, टेस्ट यू विल राइट बाय योर ओन, एंड देन कंक्लूजन। तो यहां पे राइट टेस्ट, 3 टेस्ट, एंड देन कंक्लूजन। टेक अ स्क्रीनशॉट। आई काउंट 7, इलू 2, इलू 3,
4 सेगमेंट रेवेन्यू है पहला। नेक्स्ट, छः, 7, and index. Over. So beta, we have finished with the standard. Tomorrow we are going to start with new fresh standard. So don't miss. एक second. Don't miss tomorrow's standard. Tomorrow's standard is very important. Related party disclosure. So I need your cooperation that everyone will participate in the class. And tomorrow we are going to finish with the S18 also. Might be S18 or might be S20. I have not yet decided, but S18 or S20. Okay. So tomorrow I will inform you further. So S18 or S20. If you have any question related to S17, please finish it up today itself and write all notes in your 100 pages book and 400 pages book. Complete your homework. Please, please, please. It's request to all of you not to leave your homework as it is. Beta, backlog finish karna. It will be very difficult afterwards. So don't have any backlogs. Okay. Chalo. Thank you. Take care. Bye bye.